बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 1 द रेन। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेन आइडिया का, इस पोइम का मेन आइडिया क्या है? द पोइट हेयर्स द साउंड of falling rains on leaves. The rainwater is falling drop after drop on the lower thin leaves. The music produced by the falling rain is soft and sweet. After the rain, the sun will shine bright. The dark round drops of water will begin to shine in the bright waves of sunshine. It will indeed to be lovely sight. इसके बाद रेफरेंस है, द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम द रेन बाय W.S. डेविस। कॉन्टेक्स्ट है, द पोइम इज अबाउट रेन. द फॉलिंग रेन ऑन लीव्स प्रोड्यूस्ड अ स्वीट म्यूजिक. आफ्टर रेन द सन शाइन्स ब्राइट एंड रेन ड्रॉप शाइन्स इन द सनशाइन. इट मेक अ लवली साइट एवरीवेयर. उसके बाद हम जी सिनोनिम्स देख लेते हैं. रिच, abundant, ample, plentiful, dense, crowded, thick. Poor, thin, scanty, scarce, meager, scattered. Beneath, below, under, underneath, lower than. Sweet noise, music, melody, tune, rhythm, symphony. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath, drop after drop. Did a sweet noise to hear these green leaves drinking water, drinking near. इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द पोइट वेरी ग्राफिकली डिस्क्राइब्स द सीन्स ऑफ द फॉलिंग रेन्स. द रेन पोर्स डाउन ऑन टू द टॉप thick leaves. The pitter patter of the raindrop create a musical rhythm. The drumming of drops against the canopy of foliage appeals to the poet too much that he begins to enjoy the cadenced music. The leaves seems to be gulping the rainwater. The poet calls the top thick leaves rich because they are growing profusely. He calls the lower thin leaves poor because they are growing scantily. The raindrops fall in heavy showers on the top prolific leaves, and then the droplets of water drip from the top leafage on the lower sparse leaves. However, the melody produced by the falling rain is soft and sweet. Here the poet employs the vivid imagery. He creates a visual as well as auditory image. The leaves have been personified. The poem is also rich in symbolism. The top prolific leaves symbolize the rich people and the lower thin leaves represent the poor people. The dripping of water from the top thick leaves symbolize the loose change that the rich give to the poor. The rain may be metaphor for Allah's blessing that shower like rain from above human beings. इसके बाद लाइन 7 to 12 जो है हमारे पास. एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन शैल स्टॉप अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क ड्रॉप. इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. After the rain has stopped, the dark cloud disperses and the bright blue sky appears. The sun comes out and shines bright. Its dazzling sunshine fills each raindrop with brilliance. The drop begins to blush in the bright glow. The sun unfurls radiant hues all around. The sunlight fills the sky and illuminates each crevice of land. It is indeed a lovely sight. The first stanza reveals the effect of pouring rain. It creates misty and shadowy ambience. In contrast to it, the second stanza heightens the impact of the brilliant sunshine. The first stanza creates auditory and visual image, while the second one creates a visual image when everything looks radiantly and glowing.
The whole poem highlights the profound effect of both the rain and the sun on the human. Both water and sunlight are necessary for the fauna and flora. The simultaneous manifestation of both is indispensable to create a sparkling rainbow. The emergence of the sun is the image of hope, optimism, and happiness. It brings about activity and liveliness all around. It puts an end to darkness and despair. ओके जी, ये था हमारे पास पोएम की एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास। इसके बाद जो सॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो देखते हैं। हु वॉज ड्रिंकिंग रेन? द लीव्स। हु वॉज मेकिंग द नॉइज? स्वीट ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉलिंग ऑन लीव्स। When did the sun come out? In the morning, in the clouds. When the rain would stop. When the rain would stop, the raindrops are brightened by sunshine. इसके बाद ये ट्रू फॉल्स हैं, ये भी आप लोग देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स, होप्स आप लोगों को समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी टाइप का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।